There is so much of knowledge available which is uncensored, unfiltered knowledge on the internet, on the Instagram. Don't go in for catchy sunscreens which have active ingredients also. So SPF of at least 30 should be used in all patients. So sunscreen को sunscreen ही रहने दो. Welcome to SkinInspired Podcast. I am Meg with you. This series of podcasts will answer all your queries related to skin, nutrition, and healthy skin practices and help you achieve the skin you inspire and aspire to have. So, here we will be bringing you India's top board dermatologists and skin experts from around the world who will help you achieve the healthy skin and keep you well informed. So, in our world overflowing with skin advices, trending products, and mysterious ingredients, how do we get through the noise to get the truth? So, prepare yourself for the lively discussion as we tackle the most controversial topics from the skincare industry. Buckle up because this episode might challenge everything you thought you knew about skincare. So, today we are diving into one of the essential topics of the skincare, that is sunscreen. So, India's climate presents a unique skincare challenge. That is, we have a high humidity, we have blazing sun, we have pollution can wreak havoc on your skin. So, today, a very special guest, Dr. Sonali, will be joining us and take us on a journey to know more about skin protection and skincare. So, please bookmark this episode and let's start this Sunscreen Special podcast available only on Skin Inspired channel. All right, so today with us we have Dr. Sonali Langar, who is consultant dermatologist, having experience of 18 years in dermatology and aesthetics and practicing in Ghaziabad in Noida. So today it is pleasure meeting you. First of all, let me tell you, thank you so much for joining us. The pleasure is all mine. I'm very excited to be part of this podcast. All right. So we are also excited to know the science behind the skincare. That's why we have called you, and there'll be a lot of things we'll be talking about today. Exactly, and it is very important that a dermatologist should guide the viewers because there is so much of knowledge available which is uncensored, unfiltered knowledge on the internet, on the Instagram. So the audience gets confused what to start from and what is good for their skin. So a dermatologist is going to guide starting from the basic steps of skincare and when to seek dermatologist opinion if you're suffering from any disease. Indeed. So, as we are talking about dermatology, we have so many viewers who are watching for the very first time our channel. So, just tell us that what dermatology is all about. So, dermatology deals with the diseases of skin, hair, and nails, and now aesthetics and anti-aging. That is, improvement in the signs of aging has become a very integral part of dermatology. It comes under aesthetics and cosmetology. All right. Okay, so when we heard about this term skincare, skin protection, the very first thing which comes to my mind is sunscreen. Correct. So, yes, what this sunscreen is and why it is so important for all of us. See, sunscreens, they protect us from the sun. And you all know that the sun rays are made up of a whole range of electromagnetic spectrum. So, what is important for our skin is the UVA radiation and UVB radiation. Now, visible light and blue light have also become very important because these lights are emitted from our mobile phones, from our laptops, and from all the LEDs which we are using. So, sunscreens are very important to protect against the harmful damage caused by the ultraviolet radiations, that is UVA and UVB, and also from the visible light. All right, so sunscreens are that important. Or I'm just getting curious to know this, that are there other ways also to protect your skin apart from sunscreen? From Yes. the sunscreen, Yes. If you're going out in the sun, use a broad brimmed hat which protects you all throughout. You can wear full sleeves clothing and you can take an umbrella. But Alright. if you are not going out and you're staying in the house, then also sunscreen is important. As I've already told you, that blue light and the visible light, they also are detrimental to the skin. They also lead to photo damage and enhance early signs of aging. All right, so that's why we can mention that it is important to wear sunscreen every time. Exactly. Even if you are indoor or outdoor. Yes, sunscreens are 24/7 now because if you're going out in the night, you have all lights and LED lights and floodlights which are directly impacting your skin. So once you're sleeping at bedtime, don't use sunscreen. All right. Okay, so just tell me that we know that markets are flooded with n number of products
in terms of sunscreen and everything. So just tell us something, that which product we can use, and why it is so important to use that particular product. See, ideally, if you have a skin issue, you should consult a dermatologist before you start using any sunscreen, because sunscreens are of many types, and judging upon your skin type and skin sensitivity, the dermatologist is going to prescribe you the sunscreen with an appropriate sun protection factor. But if you are starter and you want to use a sunscreen, you can use a sunscreen which is at least having an SPF of 30 and which is non-comedogenic, which is non-irritant and non-allergic. So start with the least amount of ingredients. Don't go in for catchy sunscreens which have active ingredients also. Just look for a very basic sunscreen which has a sun protection factor of minimum 30. All right. Okay, and also there's something that we sometimes we don't find fragrance in sunscreens. So is it true that those who are not having fragrance, those are the better ones? Is it true? No, it's not true. The sunscreens primarily they are of two types, right? They are physical sunscreens and you have the chemical sunscreens. Okay. So you have just mentioned about the types of sunscreen. So we will definitely like to know that what are the types of sunscreen and which is better for what type of skin? Yes, sunscreens are of two types. One is the topical sunscreens which we use, Okay. and there are oral sunscreens also. Do you know about that? No, These are oral pills which contain carotenoids, beta carotene, flavonoids. They are ingested and they protect against free radical injury. Now, these are only prescribed by dermatologists depending upon the degree of photosensitivity or UV sensitivity which you have. All right. So, you cannot buy them and eat them on your own. Now, coming on to the topical sunscreens. So, we have two main types of topical sunscreens. One is the physical or the mineral sunscreens. What do? They form a physical layer on the skin and they reflect the ultraviolet radiations. So the onset of action is immediate. You must have seen sports person and the people who are out in the sun, they apply a thick layer of zinc oxide or Yeah, titanium yeah. dioxide on the skin, right? That is a physical sunscreen. Okay. Now coming on to the chemical sunscreens. These chemical sunscreens, once applied, they absorb the ultraviolet radiations. So they take some time to act. So whenever you're going out or you intend to apply sunscreen, you have to apply 20 to 30 minutes before you are moving out, right? Because it takes time, the action is little delayed. So both the sunscreens are suitable for all skin types. Primarily, the mineral sunscreens can be used in people who are sensitive to the sunscreens, chemical sunscreens, right? And also for people who have rosacea or sensitive skin, the chemical sunscreens can lead to some redness and reaction. So those people, they use the physical sunscreens. All right, here we can say that they need the recommendation from the dermatologist before they use sunscreen. Yes. All right, so when we come to the sunscreen, there are some labels SPF and PA. So for a common man, we really need to understand what these labels are. क्या इनका मतलब होता है और किस तरह से आप जान सकते हैं? These two labels are the most commonly which you will find on all sunscreens. The SPF is the sun protection factor. It only measures the amount of protection against ultraviolet B radiation, right? Okay. But the PA, it measures the amount of protection against the ultraviolet A radiation. Okay. So SPF of at least 30 should be used in all patients. If you're using below 30, it's not going to provide any substantial improvement. And for PA, you should have a PA of around 4 for a sunscreen to be effective in providing protection against UVA. All right, all right. And now we also have the visible light protection sunscreens, because I've told you that visible light and the blue light, they're very important because we are always surrounded by gadgets all around. Yeah. Isn't it? We are using mobile phones, laptops at least 6 to 7 hours a day. So sunscreens with visible light protection are also recommended by dermatologists now. And the most important ingredient for visible light protection is iron oxide. So if you are using a sunscreen and if you are having usage of the gadgets in your daily routine in a very large amount of time, go for sunscreens which also provide visible light protection. Okay, so talking about gadgets here, so we also know that we use gadgets and also kids
यूज गैजेट्स अ लॉट, तो उनके लिए मैं जानना चाहती हूँ कि किड्स और अडल्ट्स सेम सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, क्या इसमें डिफरेंस आता है यूसेज में? The safest sunscreen if you want to use in a kid is a physical sunscreen, right? So it's going to form a layer, it's not going to get absorbed inside the skin. Okay. To start with, even calamine lotion, which is freely available in the market, Right. that can be used in the skin of kids without having any substantial effect on Okay. the skin. And if you're buying a sunscreen, always look for kid marking. The normal sunscreens you cannot apply for them. Yeah. So they are specifically designed sunscreens for kids. You should apply them on children. And also it is mentioned in all the products. Yes, the products are segregated. Adult sunscreens vis-a-vis the kid sunscreen. Okay. So now coming back to the sunscreen, I would like to know that there are a lot of sunscreens which leaves white cast and people usually don't like it. So which sunscreen which we can use? See, white cast, if theoretically you want to discern the white cast, it is much more giving you photo protection. Okay. All right. But now, white cast is because of the micro particulate formulation of the sunscreens. But now we have the nano particulate formulations also, like the tinted sunscreens, which leave less amount of white cast. So we can use those sunscreens also. Okay. And also one more thing which is coming to mind, like, is it important to apply sunscreen while you are using a heavy makeup or so? Of course. See, whatever serums or the active ingredient along with the moisturizer you're using, that should form the first layer on the skin. Okay. After you have applied your serum and moisturizer, you should apply the sunscreen. And the makeup should be the last thing. That is, makeup is like a jacket, na? You have to apply Yes. moisturizer, serum, sunscreen, followed by the makeup. Okay, for us, can you define the term SPF? Oh, it's a very elaborate definition, but to be very easy, I'll just say if a person who is out in the sun and if he gets erythema in 1 hour and if he has applied sunscreen of say 15 SPF, he will get erythema in 15 hours. So it's going to give you protection 15 times more. So according to that, how much protection will get from SPF 30? See, SPF 30 for Indian skin and Indian environmental conditions is fair good amount. It gives protection roughly around 97% from the harmful ultraviolet radiations. The more the SPF, we are only getting an advantage of say 2 to 3% more. But yes, in patients who have diseases like pigmentation, melasma and who are photosensitive, वो 2 to 3% protection extra भी is very beneficial for them. So Right, 30 is the minimum SPF which you should be looking for. So as you're very much experienced, so I really like to know from you that what innovations we can see in sunscreen industry. Well, I'll say sunscreens should remain as sunscreens. उनको innovate करना है तो sun protection factor में ही innovate करो. Okay. And don't put too much of active ingredients. Now I'm finding so many sunscreens with hyaluronic acid bombarded with many active ingredients. And the more active ingredients आप use करते हो, patient को allergy या acne निकलने का tendency और बढ़ जाता है. And the patient then blames that the sunscreen has caused it. कि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी मैम, उससे तो मुझे दाने हो गए, मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी उससे तो मुझे इरिटेशन हो गया. बट सनस्क्रीन से नहीं होता. दैट इज ड्यू टू यूज ऑफ मेनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन द सनस्क्रीन. सो सनस्क्रीन को सनस्क्रीन ही रहने दो. Definitely, we need to keep a note here. Yes, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगाने हैं तो वो तो अलग से आप लगाओ, बट सनस्क्रीन शुड बी जस्ट अ थिंग व्हिच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. ऑलराइट. सो जनरली पीपल बिलीव कि सनस्क्रीन सिर्फ फेस के लिए होती हैं. इज इट ट्रू? और कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए? मैंडेटरी सबसे ज़्यादा जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताइए. देखिए, सनस्क्रीन शुड बी अप्लाइड ऑन ऑल फोटो, मतलब जो भी सन एक्सपोज्ड एरियाज है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फेस, इवन योर ईयर्स, योर होल नेक एंड ऑन दी सन एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ दी. If you're wearing of the arms, if you're wearing Whichever short part is dresses, visible, yes. If basically. you're wearing short dresses, you have to apply it all over the arms. If you're going out in the sun and your legs and feet are exposed, you have to apply sunscreen on the legs and feet also. ओके. सो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन आते हैं. सो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज कि ऐसा कहा जाता है कि यू हैव टू रीअप्लाई द सनस्क्रीन इन एवरी 2 hours. इज इट ट्रू? Well, theoretically yes, but let me tell you, ऐसा तो संभव ही नहीं है बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग. दो घंटे में सनस्क्रीन लगाना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो वट एवर आई टेल टू माई पेशेंट्स इज दैट अप्लाई इट
in the morning, in the afternoon, and in the evening. And if you're going out at night, you have to apply it again because you will be exposed to visible lights. राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू. सो ऐसा कहा जाता है कि आप डे टाइम में लगाइए, आप सभी वेदर्स में लगाइए, लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन कि जब क्लाउडी डे हो तो सन तो नहीं है, तो इज इट इम्पोर्टेंट टू अप्लाई द सनस्क्रीन? See, cloudy day may be you have 70 to 80% of the ultraviolet rays reaching the earth. So it is not Right. that बिल्कुल ही अंधेरा हो गया, eclipse हो गया है ना. So you have sun. It is दो थोड़ी rays कम हो जाती है, but still they are reaching. So cloudy day may be sunscreen is as important as you are applying it on a sunny day. राइट या वन मोर कॉमन क्वेश्चन विच वी गेट कि आप ये बताइए कि अगर हम सन से प्रोटेक्शन कर लेंगे तो हमारा विटामिन डी कम हो जाएगा, तो ऐसा होता है? Oh God, I also get these questions from my patients. But see, vitamin D is synthesized from the skin from ergosterol, right? Skin exposure होना चाहिए for a larger body part for vitamin D to be synthesized. Like in the West, we have people who are lying down in the sun, है ना, with wearing bikinis or undergarment. That is going to produce a sufficient amount of vitamin D if you're doing so. But once you're applying sunscreen on your photo exposed areas like face and neck, body part तुम्हारा covered है, then we will say कि कपड़े नहीं पहनेंगे vitamin D synthesize नहीं होगा, isn't it? So sunscreens you're applying on the face and neck, it is not going to produce a substantial amount of vitamin D. So you have to apply sunscreens. All right. Okay, and one more question we have got कि ऐसा सवाल आया तो हम पूछ रहे हैं कि क्या सनस्क्रीन लगाने से भी कैंसर हो सकता है? Okay, again a very tricky question, right? So initially there were studies in the West which showed Western. Let me tell you one thing कि जो गोरे लोग हैं, जो Western people हैं, they are exposed to sun and no amount of sun exposure कम हो ज़्यादा हो, they can get skin cancers. हाँ? They're predisposed to get skin cancers. So Western studies elucidated कुछ ingredients जो ऐसे थे जो कैंसरस टेंडेंसी करते थे, बट ओवर द टाइम दे रिमूव दोज इंग्रेडिएंट्स. वैसे लेट मी टेल यू दैट सिंस वी आर ब्राउन कलर, वी आर कॉल्ड दिस स्किन ऑफ कलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमें कैंसर की टेंडेंसी नहीं होती है. एंड वन गुड थिंग कि दोज इंग्रेडिएंट्स हैव बीन नॉट मार्केटेड नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो सनस्क्रीन जो इंडिया में आते हैं, दे आर सेफ and they don't contain those ingredients. Even if we were using it, but our tendency to get cancer is very negligible. But now those ingredients are out, so they are out. So sunscreens will not cause All right. cancers. So commonly we are at safe Yes, space. yes, of course. All right. Then हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि सनस्क्रीन जो है वो आपको कैंसर, स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकती है? Yes. जो भी इंडियन पॉपुलेशन में कार्सिनोजेनेसिस की कुछ भी टेंडेंसी है, वो सनस्क्रीन काफ़ी हद तक कम कर सकता है. लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब स्किन पे पड़ती है, व्हाट हैपन्स, कैंसर क्यों बनता है? दे कॉज फ्री रेडिकल इंजरी, है ना. दे गो इनटू द एपिडर्मिस, दे गो इनटू द डर्मिस. बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी देयर वेरियस म्यूटेशंस विच कैन हैपन एंड स्किन कैंसर डेवलप हो सकते हैं. दो इंडियन पॉपुलेशन में स्किन कैंसर्स की टेंडेंसी काफ़ी कम है, पर वट एवर टेंडेंसी इज देयर वो हम सनस्क्रीन लगा के एलिमिनेट कर सकते हैं. सनस्क्रीन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है दैट इज़ फॉर फोटो डैमेज प्रिवेंशन. लाइक झुर्रियाँ पड़ना, जैसे आपने देखा होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं वो यूवी इम्पैक्ट उन पे ज़्यादा होता है, एंड सिंस दे आर नॉट अप्लाइंग सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं पहाड़ी लोगों में. Yes, even at the young age. यस, कश्मीरी पॉपुलेशंस में होते वो 30 साल के लगते हैं 60 इयर्स के, है ना. सो फोटो डैमेज प्रिवेंशन सनस्क्रीन करता है, एंड पिगमेंटेशन प्रिवेंशन भी सनस्क्रीन करता है. यूवीए प्राइमरीली फोटो डैमेज प्रिवेंट करता है, एंड यूवीए यूवीबी प्रोटेक्शन दोनों पिगमेंटेशन भी प्रिवेंट करती है. All right. Okay. Next question which I would like to ask कि what amount is sufficient or important for us to apply? अगर हम थेरेटिकल बात करें तो 2 fingertip units फॉर द फेस, Okay. ये पूरा which it's a very substantial amount, and 1 fingertip for the neck and the earlobes, right? But अगर हम रियलिटी में बात करें तो इवन इफ यू अप्लाइंग 2 fingertip units to the face, neck and the earlobes,
आई थिंक इट इज सफिशिएंट। नहीं तो बहुत ज्यादा लगाने से पीपल गेट डीमोटिवेटेड, Also, we सनस्क्रीन have to जल्दी keep खत्म हो rubbing. जाता है, Yeah. सनस्क्रीन खत्म हो जाता है जल्दी, देन दे डोंट बाय इट अगेन बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन अनदर बॉटल ऑफ सनस्क्रीन। अगर वो 2 फिंगर टिप यूनिट्स फेस, नेक एंड ईयर लोब्स पे लगा लेते हैं, दैट इज आल्सो इट्स ओके। All right. Okay, so you being a doctor of dermatology, so just tell us ki what kind of concerns you get from your patients in regard to sunscreen. सी सनस्क्रीन सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न जो है कि सनस्क्रीन किस एज से शुरू करें वो किसी को पता नहीं होता। सबको लगता है कि हम 30s में आएंगे, 40s में आएंगे, व्हेन विल बिकम ओल्ड देन विल अप्लाई सनस्क्रीन्स। दो द यंगर जनरेशन इज मच बेटर नाउडेज, दे आर अप्लाइंग सनस्क्रीन्स बिफोर हैंड ओनली। बट जैसे हम 30-40 ईयर्स के एज की बात करूँ तो दे डोंट नो व्हेन टू अप्लाई। डॉटर लगा रही है, मदर नहीं लगा रही, isn't it? वो हाँ हाँ इसका तो टाइम में लगाएगी। भाई टाइम तो आपका उनसे ज़्यादा है बिकॉज आपको फोटो डैमेज पिगमेंटेशन हो चुका है। एंड द सेकंड कंसर्न इज के somehow the men folk they are very reluctant in using any sunscreen. Again I'm talking about the 30-40s वाले age group. Right. The younger age group is very well knowledge and they are taking proper skin care. But 30-40s के जो middle age men होते हैं 50s के, उनको लगता है ओहो ये तो फालतू की बात है, हम सनस्क्रीन क्यों लगाए। Right, they are like कि हम तो ऐसे ही बहुत हाँ पैसा खर्च रहे हैं, ऐसे क्या फायदा है। सो दिस इज a very important challenge which we as a dermatologist have to break, है ना। फीमेल वाइफ को दिखाने आएंगे पर हस्बैंड नहीं लगा रहा, है ना। देन आई व्हेन आई राइट अ प्रिस्क्रिप्शन ऐसे सर आप भी लगाओ, एंड देन दे टेकिंग बैक, अच्छा मेन भी लगाते हैं, ठीक है। सो दैट जेंडर बायस समहाउ इन द ओल्डर एज ग्रुप इज देयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज जो हम पेशेंट को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। It is important for everyone, for your child, for yourself, and Yes, for the mother. yes, and the appropriate sunscreen usage should be there. It's very important. So we also get one more question that if I'm having SPF in my makeup, so do I need to use the sunscreen even then? Yes, of course, you have to use a sunscreen because that makeup sunscreen is not that effective. Mostly it is in the range of 15 SPF. So 15 SPF का कोई भी added advantage UV प्रोटेक्शन में हमारे लिए नहीं होता है। तो आप जो मेकअप कर रहे हो करो, सनस्क्रीन अगर उसमें है, सन प्रोटेक्शन है, तो आपके लिए वो एडेड एडवांटेज है। बट यू कैन नॉट एलिमिनेट सनस्क्रीन यूज इफ यू आर यूजिंग अ मेकअप विद SPF. Okay. Also, we get to know such concerns that we are applying the sunscreen, but still we are getting tanned. So, क्या possibility इसमें होती है? See, tanning is a protective mechanism for our skin. हम लोगों को स्किन कैंसर्स क्यों नहीं होता? बिकॉज द मेलेनिन कम्स ओवर और वो फ्री रेडिकल इंजरी को डैमेज करता है, फ्री रेडिकल इंजरी को प्रिवेंट करता है आफ्टर यू आर एक्सपोज टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। टैन कैन बी इमीडिएट टैन, okay, and it can occur if the patient has not applied sunscreen in a proper quantity. थोड़ा सा लिया, बस हल्का सा यहाँ लगाया, बात हो गई खत्म, चलते बनो, ठीक है। एज आई हैव टोल्ड यू 2 फिंगर टिप यूनिट्स फुल फेस एंड नेक लगाओगे तब भी अच्छे से प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। एंड रीएप्लीकेशन नहीं है। इफ यू आर गोइंग आउट इन द सन, वेकेशंस पे जा रहे हैं, बाली घूमने जा रहे हैं, इंडोनेशिया पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, दे आर ओपन, isn't it? They are not reapplying the sunscreen because the moment you're out in the sun, सनस्क्रीन इनएक्टिवेशन शुरू हो जाता है। तो अगर आप बाहर हो, वेकेशन पे हो और आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो आपको 2 घंटे या मैक्सिमम 3 आवर्स में सनस्क्रीन इन प्रॉपर क्वांटिटी रीअप्लाई करना है, ठीक है। तो टैनिंग तभी हो रही है बिकॉज ना आप प्रॉपर क्वांटिटी सनस्क्रीन के लगा रहे हो और ना ही आप सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड इवन इफ टैनिंग हो रही है, इफ यू हैव नॉट अप्लाइड अ सनस्क्रीन, आपने नहीं लगाया होता तो टैनिंग 5 गुना और होती, ठीक है। और आपने अभी सनस्क्रीन लगाया है, प्रॉपर क्वांटिटी में लगाया, रीअप्लाई करो, टैनिंग हो रही है, पर आपका वो जो मेलेनिन सिंथेसिस है वो कम है, मतलब टैनिंग आपको कम हो रही है। सो हम ये भी समझना जरूरी है कि टैनिंग होगी पर कम होगी वंस यू अप्लाइड द सनस्क्रीन। एंड ऑल्सो कि टैनिंग जो है वो रिवर्सिबल होती है, मतलब हाँ रिवर्सिबल होती है। सी देयर 2 टाइप्स ऑफ टैनिंग। तो इमीडिएट टैनिंग, यू आउट इन द सन, है ना, 3-4 घंटे में आपको अपना फेस जो है वो पिगमेंटेड लगना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज रिवर्सिबल। दैट इज आफ्टर से 2 to 3 वीक्स आपको अपना नॉर्मल टेक्सचर दिखना शुरू हो जाता है। और एक होता है डिलेड टैनिंग। डिलेड टैनिंग 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते के बाद यूजुअली पेशेंट रिसीव करता है, एंड दैट कैन स्टे फॉर 1 to 2
months also. तो इसलिए सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो दोनों टैनिंग को जो है वो प्रिवेंट करता है. Okay. और अगर होगी तो कम होगी. Right. All right. So before we sum up this podcast, जो हमारे लेमैन हैं, कॉमन मैन हैं, they would definitely like to know कि अगर उन्हें सनस्क्रीन चुननी है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो आप प्लीज़ हमें बताइए. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जब आप सनस्क्रीन खरीदने जा रहे हो तो आपको उसका देखना है SPF. इट शुड बी नॉट लेस दैन 30. ठीक है. देन यू हैव टू लुक फॉर UVA UVB प्रोटेक्शन. और अब जैसे मैंने आपको बताया, विजिबल लाइट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन डैमेजिंग द स्किन. तो आपको UVAB एंड विजिबल लाइट प्रोटेक्शन तीनों साथ में देखनी है. और अपने स्किन को आपने एनालाइज करना है. अगर तो आपका ऑयली स्किन है तो आप ऑयली सनस्क्रीन नहीं लोगे, आप लोगे नैनो पार्टिकल, कोई मैट फिनिश वाला सनस्क्रीन. वो सनस्क्रीन पे लिखा होता है Right. मैट है या लिक्विड फॉर्मुलेशन में है, तो आप वो चूज़ करोगे. अगर आपका ड्राई स्किन है और आप ले लेते हो ऑयली स्किन वाला सनस्क्रीन, तो वो भी आपको सूट नहीं करेगा. तो ड्राई स्किन के लिए आप एक लोगे लोशन बेस्ड या एक सनस्क्रीन विच इज लिटिल ग्रीजी इन कंसिस्टेंसी. So first important is SPF of 30 minimum and broad spectrum UV protection. Also patients जिनका acne prone skin है, please look for नॉन कोमाइडोजेनिक टेंडेंसी, बिकॉज सनस्क्रीन्स अगर उनमें फिजिकल इंग्रेडिएंट ज़्यादा हो, दे कैन ब्लॉक द पोर्स एंड ऑलरेडी यू सफरिंग फ्रॉम एक्नी, यू विल गेट एग्जैजरेशन ऑफ एक्नी. सो द एक्नी शुड बी नॉन कोमाइडोजेनिक एंड ऑल्सो हाइपो एलर्जेनिक. उसमें सब मेंशन्ड होता है. तो आप ये सारी चीज़ें देखिए. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो एक्टिविटीज़ जिनकी होती है जिसमें स्वेटिंग इन्वॉल्व है, जैसे जिमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, और कुछ ऐसे आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं या काम ही ऐसा है, नेचर ऑफ जॉब जिसमें स्वेटिंग हो रही है, तो यू हैव टू लुक फॉर द वाटर रेजिस्टेंट कंसिस्टेंसी ऑफ द सनस्क्रीन ऑल्सो. ठीक है. सनस्क्रीन पे मेंशन होता है, ये सनस्क्रीन स्पेशल आती हैं जो वाटर रेजिस्टेंट भी होती है. एंड दे शुड, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन? यू शुड रिमेन एक्टिव व्हेन यू आर इमर्स इन वाटर फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स. ठीक है. तो आपको वो, अगर आपका नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी है, तो आपको एक एडिशनल चीज़ जो ढूंढनी है वो है वाटर रेजिस्टेंस. All right. So what would be the final advice which you would like to give to our subscribers? The final advice, the last but not the least, would be please apply sunscreens. बाहर हो, अंदर हो, धूप है, छाँव है, क्लाउड्स है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है. और अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन लगा रहे हो तो आप इमीडिएटली सनस्क्रीन लगा के बाहर जा सकते हो. पर अगर आप केमिकल सनस्क्रीन लगा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 20 to 30 मिनट सनस्क्रीन पहले लगा के जाना है. ओके. और सनस्क्रीन SPF शुड बी एटलीस्ट 30. सनस्क्रीन तो आप लगाओ ही लगाओ, एक एडिक्वेट मात्रा में लगाओ. फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन भी एडिक्वेट होनी चाहिए. और जितने आपके सराउंडिंग में लोग हैं जो सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, उनको आप मोटिवेट करो सनस्क्रीन लगाने के लिए. बहुत बार मैं देखती हूँ बच्चे लगा रहे हैं, बेटी लगा रही, बेटा लगा रहे हैं, मम्मी नहीं लगा रही, पापा नहीं लगा रहे, है ना. तो ये कंसेप्ट इज़ नॉट जनरेशन बेस्ड. इट इज़ नॉट कि इस एज में सनस्क्रीन लगता है. सनस्क्रीन शुड बी फॉर ऑल एज ग्रुप्स. तो आप भी लगाओ. जो आपके परिवार में लोग हैं, आप उनको भी मोटिवेट करो लगाने के लिए. और जो आपके सराउंडिंग में जो सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो मिथ्स हैं सनस्क्रीन के बारे में, जो कुछ पाले बैठे हैं, वो मिथ्स आप उनके तोड़ो ताकि वो भी सनस्क्रीन यूज़ करें और अपनी स्किन हेल्थ को बेटर करें. थैंक यू. Well said. All right. So I think this was such a informative session. Thank you so much for joining us. Thank you so much. My pleasure. I had a wonderful time. Thank you. And to our listeners, if you have gained something new from this podcast, so subscribe Skin Inspired for more expert-backed skincare secrets and share this video with someone who really want to up their sunscreen game. So let's lead to a happier and healthier skin.